Good morning, students. Yesterday we have seen the first part of chapter number 14, and in that we have seen about the northern Himalayan region and the plains, about plains, northern plains. So, now we'll see about the third part of physiography, and that is Peninsula Plateau. Now, what does mean by plateau? Plateau is actually a place which is higher than plains. 180 मीटर से जो ऊपर होता है सी लेवल के 180 मीटर से जो ऊपर होता है उसको हम कहते हैं प्लेन्स एंड प्लेस विच इज़ हायर टू 400 to 500 मीटर अबाउट द सी लेवल दैट इज़ कॉल्ड प्लेटो. So this is the third physiography of India, that is Peninsula Plateau. See here the word peninsular लिखा है. Why Peninsula Plateau? Because the peninsular part of India, that is a triangle shape of India, is plateau. उसका ज़्यादातर proportion plateau का है. That's why यहाँ पे name है Peninsula Plateau. This is the oldest region of India. This region appears as an inverted triangle. As I said, that triangle part, inverted triangle. Its average height is about 600 to 900 meters. I said 180 meters above the sea level is plain, and when it comes to 500 to 900, यहाँ पे लिखा है 600 to 900 meters, then it becomes a plateau. Its northern part slopes towards the northeast, which is evident from the flow of Chambal, Son and Damodar river. Yes, हमको कभी भी આપણે અગર ગુજરાતીમાં વાત કરે, ગુજરાતીમાં કહીએ તો આપણે ઢાળ ક્યાંથી ખબર પડે? જે બાજુ પાણી જાય એને કહેવાય ઢાળ, है ना? वैसे ही ये सब रिवर्स है, चंबल, सोन, दामोदर, दे ऑल फ्लोज वेयर दे फ्लोज टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. ये सब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाती है. इट मीन्स उसकी ढलान किस तरफ की है? नॉर्थ ईस्ट साइड की उसकी ढलान है. द सदर्न पार्ट स्लोप्स टूवर्ड्स द साउथ ईस्ट. सदर्न पार्ट किस तरफ स्लोप होता है? साउथ ईस्ट. मोस्ट ऑफ इस एरिया इज इन साउथ, हेंस इट इज़ कॉल्ड सदर्न प्लेटो. As it is surrounded by sea on its three sides, it is called a peninsula plateau. I said peninsula. Peninsula मतलब area which is covered from three sides by water. So the peninsula plateau of India is divided into two parts. First is Malwa plateau and second is Deccan plateau. So first we'll study about Malwa. Aravalli range is situated in the northwest part of Malwa plateau. Northwest, दिमाग देखो, अगर if you know the map, then you people will able to understand the direction. इंडिया का अगर डायरेक्शन लर्न करना है तो जम्मू कश्मीर को याद रखो, तमिलनाडु को याद रखो, गुजरात को रखो और अरुणाचल प्रदेश को रखो. यहाँ पे लिखा है नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है पार्ट ऑफ राजस्थान, पंजाब, वो सब है नॉर्थ के स्टेट, और राजस्थान आता है, राजस्थान गुजरात आता है वेस्ट में. सो उस तरफ का डायरेक्शन होता है. फाइन. अरावली इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड. इट इज़ अ फोल्डेड माउंटेन. माउंट आबू इज़ अ फेमस हिल स्टेशन ऑफ दिस रेंज. ऑल ऑफ अस नो माउंट आबू. माउंट आबू है राजस्थान स्टेट का. सो एज इट इज़ सेड, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट का मालवा प्लेटो इज़ ऑफ नॉर्थ वेस्ट पार्ट. इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड प्लेजेंट. गुरु शिखर इज़ अ हाइस्ट पीक and it is 1722 meter high. To the south of this region, the river Chambal and Betwa, emerging from Vindhyachal, flows northwards and meet river Yamuna. नॉर्थ की तरफ ये फ्लो होता है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि इसकी ढलान नॉर्थ ईस्ट की है. सो वो किसको जाके मिलती है? रिवर यमुना को मिलती है. वाइल रिवर सोन फ्लोज नॉर्थवर्ड्स एंड मीट रिवर गंगा. It can be known from the direction of the river flow that the region slopes northward. The northeastern part of this central upland is known as Bundelkhand. Bundelkhand is a place of Uttar Pradesh state. Besides this, river Luni and Banas are also originate in Aravalli range in northeast. This river vanish in run of Kutch, while Sabarmati Mahi river meet the Gulf of Khambat. See, जो कल हमने देखा था वीडियो, उसमें ड्यून लिखा था. ड्यून मतलब ऐसी रिवर जो डेजर्ट में जाके कहीं पे मिल जाती है. सो विच इज़ अ ड्यून रिवर ओवर यर? दिस रिवर, सी इट इज़ रिटन ओवर यर. रिवर लूनी एंड बानस, दीज आर द ड्यून रिवर्स बिकॉज दे गो इन डेजर्ट and get mixed with the desert, while Sabarmati and Mahi rivers meet the Gulf of Khambat. From the flow of this river, it can be ascertained that the western part of Malwa Plateau slopes towards southwest. रिवर की फ्लो से पता चलता है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ मालवा प्लेटो किस तरफ स्लोप होता है? साउथ वेस्ट की तरफ.
Rajmahal Hills and Shillong Plateau are the part of Chota Nagpur Plateau, which also includes Ranchi Plateau. Chota Nagpur, Ranchi Plateau. Ranchi is a place of Jharkhand state. Now comes, yes, see this is a map. यहाँ पे 3 दिए हैं, मालवा, then Deccan Plateau and Chota Nagpur Plateau. See, ये Ranchi, as I said, it is in Jharkhand place. Malwa Plateau, you can see it is in Madhya Pradesh, somewhat it is in Rajasthan also. And Deccan Plateau, taking the most part, it is in southern India. So now we'll study about the Deccan Plateau. The Deccan Plateau is situated in the south of Satpura, Mahadev and Maikal ranges, which are located to the south of Malwa Plateau. The northern western part of the plateau are composed of lava deposit. On the western side, its border is demarcated by Western Ghat, which runs north-south from along the Arabian Sea coast. See now, without map, it is quite difficult to make you people understand the directions. But the thing is that, see, the northwest part of this plateau is composed of lava deposit. किसका पार्ट? डेक्कन प्लेटो का नॉर्थ वेस्ट. ना अगर आप इसमें देखो, सी इफ यू सी ओवर हियर नॉर्थ एंड वेस्ट. इफ यू नॉर्थ मीन्स व्हाट? गोइंग ऊपर की तरफ देख लो, एंड वेस्ट मतलब योर लेफ्ट हैंड. सो विच स्टेट इट विल कवर? इट इज़ कवरिंग ओवर हियर महाराष्ट्र. एंड हमने पढ़ा भी है कि महाराष्ट्र का ये जो विदर्भ एरिया है वो पूरा प्लेटो एरिया है, विच इज़ वेरी, वहाँ पे पानी की बहुत किल्लत होती है, and it is made up of lava deposit. Fine. See, from here you can say northwest of Deccan Plateau, north of India, it is of Deccan Plateau. Fine. So where we were, yes, it has several local names. It is known as Sahyadri in Maharashtra and Karnataka, as Nilgiri in Tamil Nadu, and as Annamalai and Chardunam ranges along the border of Kerala and Tamil Nadu. Here we are talking about the Western Ghat. अगर आप कभी महाराष्ट्र से सदर्न साइड गए हो बाय वाया ट्रेन और बस, you people will, I don't know whether you have observed or not, but there are line of mountain. वहाँ पे mountains की पूरी एक लाइन है, उसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, जिसका अलग अलग नाम है अलग अलग स्टेट में. उसको सह्याद्री नाम से जाना जाता है इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, एंड इन तमिलनाडु इट इज़ नोन बाय द नेम नीलगिरी. The southern portion of the Western Ghat is more lofty. Then comes, generally the average height of Deccan Plateau ranges from 900 to 1000 meter, but at few places it exceeds that height. Few isolated hills having more than 900 meter of height from the eastern boundary of this plateau. This is called Eastern Ghat. ईस्टर्न साइड मतलब जो ईस्ट साइड में है उसको ईस्टर्न घाट कहेंगे, और जो वेस्ट साइड में दैट विल बी टर्म्ड एज वेस्टर्न घाट. It has a general slope towards the southeast, which is evident from the direction of the flow of river. Yes, southeast का इसका slope है, because all the rivers of South India, yes, all the rivers of South India flows in Bay of Bengal. So that shows that इसका slope किस तरफ का है? southeast का इसका slope है. Except river Narmada and Tapi, which flows westward, but these are not of South India. नर्मदा एंड तापी दोनों किसकी रिवर है? गुजरात में आती हुई रिवर है. सो वो कहाँ पे उसकी फ्लो कौन सी है? वेस्ट वर्ड के, क्योंकि वो वहाँ मध्य प्रदेश से हो के गुजरात में आती है. मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ डेक्कन प्लेटो फ्लो ईस्टवर्ड एंड मीट बे ऑफ बंगाल. आई सेड ऑल द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया, नॉट आई सेड डेक्कन प्लेटो, ऑफ साउथ इंडिया आई हैड सेड. सी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, देन तुंगभद्रा, ऑल दिस रिवर्स कहाँ किस तरफ जाती है? ईस्ट की तरफ आती है और बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है. देन कम्स कोस्टल प्लेन्स. नाउ कोस्ट मतलब यू ऑल नो दरिया किनारों, एंड कोस्टल प्लेन्स मतलब प्लेन्स यू नो एन एवरेज हाइट अबाउ 180 मीटर. सो कोस्टल प्लेन्स आर द प्लेसेस नियर द कोस्ट. सो विल सी अबाउट कोस्टल प्लेन्स. Peninsula Plateau is surrounded by a narrow belt of plain from Kutch to Odisha. It is divided into western and eastern coastal plain. The west coast plain is spread from Gujarat to Kerala. Yes, from Gujarat, Daryai Patti. In short, it is Daryai Patti. Except in Gujarat, the plain is mostly narrow. It is very much undulating
and it is known as Malabar Coast to the south of Goa. West Coast rivers have developed creek at their estuaries. What is estuaries? You know, estuaries का मतलब होता है जब नदी किसी सी को मिले. That thing is called estuaries. Most of these creeks are submerged valley under the river water. These are formed due to the emergence of seashore. It provides favorable conditions for fishery. There are many natural ports on the western coast, which includes Mumbai and Marmagao. Backwaters has developed along the southern coast of Kerala, and these are known as Kayal in local language. East Coast Plain is much broader than the West Coast Plain. Broader है, यहाँ के coast के plain ज़्यादा broader है. There is a substantial alluvial deposit in the deltas of Kaveri, Krishna, Godavari and Mahanadi. Its northern coast is known as North Sircar coast and the Tamil Nadu coast is known as Coromandel coast. उसको कौन से नाम से जाना जाता है? Coromandel coast के नाम से जाना जाता है. See, I am having one video of estuaries. We'll see what is actually estuaries. Wait a minute. So you can see over here, this is a river. See the flow, कभी sea ऐसे नहीं बहती है. This is a river and it is getting mixed with the sea. That thing is called estuary. Fine. So that was estuary where a river get mixed with the sea. Now we have seen about the Coromandel coast and the coastal plains. Now comes, see over here, you can see the map over here. यहाँ पे लिखा है नॉर्दर्न सी. कहाँ पे लिखा है? एक्चुअली जो एरो किया गया है दैट इज़ ओडिशा से लेके इट इज़ अप टू नॉट आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश के अंदर आता भी नहीं है, जो उसको कहते हैं नॉर्दर्न सिरसार. एंड कोरामंडल जो तमिलनाडु का पार्ट है, आंध्र प्रदेश का थोड़ा और थोड़ा तमिलनाडु का, दैट इज़ कॉल्ड दैट. एंड मालाबार प्लेन, सी फ्रॉम इट इज़ गोइंग लाइन फ्रॉम केरला अप टू कर्नाटका, दैट इज़ मालाबार प्लेन्स. सो ऊपर का है दैट इज़ इंडो गैंजेटिक प्लेन, गंगा रिवर की प्लेन्स है. एंड दीज आर कोस्टल प्लेन्स. सी डिफरेंस आप बोलो कि दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डिफरेंस. कोस्टल प्लेन मतलब विच आर नियर टू सी. नाउ these plains are not that useful, they are not that fertile because they are salty. वहाँ की ज़मीन कैसी होगी? Salty. So they are not that fertile. While when you talk about the river plains, northern Indian plains, they are very fertile for growing of crops. Next comes archipelagos. Archipelagos means what? Archipelagos मतलब group of island. छोटे 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 आइलैंड का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं archipelagos. There are few archipelagos in India, that is Andaman Nicobar. Lakshadweep are the major archipelagos among them. There are many smaller islands in Lakshadweep and these are located at some distance of Kerala coast. If some of you have visited over there, you people might be knowing. These islands have a horseshoe shape. Such coral islands are called atolls. Andaman Nicobar Island are situated in Bay of Bengal. Here the number of islands is also more and these are situated very far from Indian coast. Yes, अंडमान निकोबार हम इंडिया का मैप करते तब हम सबको पता है कि वो कितने दूर है. वो किस साइड है? ईस्ट साइड है. फाइन. और लक्षद्वीप है वेस्ट साइड ऑफ इंडिया. These are the few mountain there are the few mountain ranges, some of which are formed due to volcanic activity. These islands are spread over 350 km and have a strategic importance. Yes, so see over here you can see a picture of archipelagos. कई सारे आइलैंड है एक सी के अंदर, थोड़ी थोड़ी जगह पे जब आइलैंड हो, that is called archipelagos. Yes, the only active volcano in India is Barren Island in Andaman and Nicobar archipelago. Narcodam, which is very near to this, is a dormant volcano. वो शांत हुआ है, पर एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? बैरन आइलैंड का. Thus we can say that there is a diversity
in physical features of India. Yes, today we have seen about the plateaus, about the coastal plains, and about the archipelagos. Every region has its own distinct characteristic, and yet all regions are interconnected. All of them have important contribution in the progress of the nation and are useful in the forest resources. Northern fertile plains are also called storehouse of grains. Yes, मैंने आपको बोला that these are northern plains को हम store of grains कहते हैं क्योंकि they are very fertile. Coastal plains are not that fertile. There are some of the things which can grow in the coastal plains. You all know coconut coastal plain पर ही उगते हैं. But if you talk about rice and wheat, they cannot grow over there. Southern Plateau is rich in many mineral resources which has enhanced the national progress. See now, plains are useful for growing of crops while plateaus are mineral rich region. Plateaus के नीचे से आपको काफ़ी सारी खनिज मिलती है. That's why from plateaus you can get minerals while in plains you can grow grains. Many rivers which with large volume of water originate in northern mountain region which is also known for the variety of forest resources. Yes, इंडिया की सबसे 3 बड़ी नदी माउंटेन में से ही आती है, हिमालयन माउंटेन में से ही आती है एंड वहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट भी है विच आर वेरी यूजफुल फॉर द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. This is a photo of Barren Island, which is only active volcano of India. Now we'll see about rock. A composite matter made up of one or more mineral is called rock. Rock मतलब सबको पता है पत्थर. Fine. Rock can be hard as well as soft. They can be porous and non-porous. They can be light or heavy in weight. Various types of rocks are formed due to the different processes. Rocks can be divided into 3 categories on the basis of their formation. कौन सी 3 कैटेगरी है? फर्स्ट इज igneous rock, second is stratified rock, and third is metamorphic rock. See here a table is given. Igneous rock, intrusive, extrusive, and these are volcanic. Then stratified, they are inorganic, chemically formed, and they can be organic also. And metamorphic are contact and regional. I would have not given up images of this because we cannot differ by seeing which type of rock it is actually. So next comes igneous rock. What does mean by igneous rock? The intense heat in the interior of the earth is responsible for the formation of this rock. The interior of the earth remains very hot due to this heat. So the matter here is in semi-liquid state. We all know interior of the earth is very hot. वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए तो कभी कभी वॉल्केनो बहुत गर्मी बढ़ने से वॉल्केनो फट जाते हैं. विच इज़ कॉल्ड मैग्मा. इफ़ यू हैव सीन द मूवी वॉल्केनो, आपने ये वर्ड सुना होगा. इवेंचुअली व्हेन दिस मैग्मा कूल्स डाउन, रॉक इज फॉर्म. दिस रॉक आर फॉर्म ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट, हेंस दिस आर कॉल्ड इग्निशियस, अग्निय रॉक. जो अग्नि से पैदा हुए, अग्नि ठंडी होने के बाद ये रॉक बनते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इग्निशियस. In the formation of the crust of the earth, these rocks were formed earliest. So these are actually called primary rocks. सबसे पहले कौन से रॉक बने थे? Igneous rock. अगर igneous नाम से नहीं याद रहते तो अग्निय नाम से याद रखना कि सबसे पहले वो उसी की वजह से बने थे. Yes. So at many places in Rajasthan, Madhya Pradesh, and southern peninsula in India, such rocks are formed. Igneous rocks are more solid of all forms. Granite is a well-known example of plutonic rock. Basalt is also this type of rock. Second comes stratified rocks. Igneous rock disintegrate due to the collective effect of water and other forces. These are also known as sedimentary rocks. The broken rock material is constantly deposited in water and they form layer. This rock material is deposited into different layer. The upper layer of exert pressure on the layer of underlying rock which were formed initially and are lying at the bottom,
and eventually rocks are formed with different layer. These are called stratified rocks. See, igneous rock यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यू टू द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ वाटर एंड फोर्सेस. इन दोनों की फोर्स की वजह से ये रॉक क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और टूटने के बाद दे फ्लो विद द वाटर, सेडिमेंटरी रॉक्स हो जाते हैं. एंड एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनती है, और ऊपर की लेयर की प्रेशर की वजह से यहाँ पे लेयर्स बन जाती है इस रॉक में, एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक. सो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स आर एक्चुअली born out of igneous rock. Its example are gypsum, limestone and coal. Coal and gypsum are obtained from Bihar and Jharkhand states. Third comes metamorphic rock. In certain peculiar condition, the form, composition and other characteristics of rock are totally changed due to the combined effect of the two factors, high pressure and pressure on the high temperature and pressure on the rock strata. The igneous and the sedimentary rock changed into totally new form. These newly formed rocks are known as metamorphic rock. Marble and quartzite available in Rajasthan are this example. See, सबसे पहले होते हैं इग्निशियस रॉक. इग्निशियस रॉक की लेयर की वजह से, प्रेशर की वजह से स्ट्रेटिफाइड रॉक बनते हैं, एंड देन बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द रॉक स्ट्रेटा कोई नया ही रॉक बनता है. दैट रॉक इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक. एन एग्जाम्पल इज मार्बल. सो देयर आर 3 types of rock. These are igneous, stratified and metamorphic rock.